Question number 21. Trachoma is a chronic infectious disease of option A eye, option B ear, option C nose, option D mouth. What is trachoma? Option A, eye. Correct. It is eye. Option A eye. Then question 22. Blindness is option A inability to count the fingers at a distance of 1 meter. Option B inability to count the fingers at a distance of 3 meters. Option C inability to count the fingers at a distance of 5 meters. And option D inability to count the fingers at a distance of 10 meters. So blindness is 3 meters. 3 meters. Correct. Option B. Okay, it is option B. Then next question. Which one of the following diseases is also known as Hansen's disease? Option A rabies, option B tetanus, option C leprosy, option D polio. So Option C, leprosy. correct, leprosy is also known as Hansen's disease. Then question number 24. Pet dogs should be vaccinated properly to prevent option A polio, option B rabies, option C plague, and option D cholera. Option B, rabies. Correct, rabies. Next, question number 25. Pellagra is a disease of option A carbohydrate deficiency, option B protein deficiency, option C vitamin B3 deficiency, and option D vitamin A deficiency. Option C, vitamin B3 deficiency. Correct, it is vitamin B3 deficiency. Then next, question 26. The disease spread through rat fleas is option A polio, option B malaria, option C filariasis, and option D plague. Option D, plague. Correct, it is plague. And what is the causative agent plague का? प्लेग वायरल है, बैक्टीरियल है या फिर फंगल है? It is viral. No, plague is not viral. Plague is bacterial. Okay, it is bacterial. And which bacteria? Name of the bacteria? So causative agent of plague is Yersinia pestis. Okay, Yersinia pestis is the causative agent of plague. Streptomycin is the antibiotic used to treat plague. ठीक है? Okay. Next question, question number 27. Diethyl carbamazine, that is DEC, is effective in the treatment of option A polio, option B malaria, option C filariasis, and option D plague. So what is the correct answer? Filariasis. Yes, DEC Hetrazan, its popular brand name. Popular brand name जो है DEC का, that is Hetrazan, and Hetrazan is used to treat filariasis. Okay, ठीक है. Now next question, question number 28. Continuous fever for 3 to 4 weeks, relative bradycardia, body pain are the symptoms of option A asthma, option B typhoid, option C leprosy, and option D polio. क्या आंसर? अस्थमा में फीवर होता है क्या 3 to 4 वीक्स के लिए? नहीं. नहीं, देयर इज नो फीवर इन अस्थमा. देन टाइफाइड में फीवर होता है क्या? नहीं. टाइफाइड में फीवर नहीं होता है. होता है सर. यस, देयर इज फीवर इन टाइफाइड. ओके, टाइफाइड में फीवर होता है. सो फीवर फॉर 3 to 4 वीक्स, रिलेटिव ब्राडीकार्डिया एंड बॉडी पेन, ये जो सिम्टम्स है, these are the symptoms of typhoid. ठीक है? Okay. Then next question. A protein coat called capsid is related to option A virus, option B bacteria, option C fungi, and option D amoeba. Option A, virus. Correct, capsid virus. तो वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए और डीएनए, वो कैप्सिड के अंदर में रहता है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Which one of the following diseases is often characterized by
lockjaw. Okay. So options are option A rabies, option B tetanus, option C leprosy, and option D polio. Tetanus. टिटेनस करेक्ट इट इज टिटेनस टिटेनस में लॉकजॉ हो जाता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कैंडिडा अल्बिकन्स इज अ ऑप्शन ए बैक्टीरिया ऑप्शन बी प्रोटोजोआ ऑप्शन सी फंजाई ऑप्शन डी वर्म सो क्या है कैंडिडा अल्बिकन्स Protozoa. नो नॉट प्रोटोजोआ Sorry, it's fungi. यस इट्स फंजाई कैंडिडियासिस ठीक है कैंडिडियासिस होता है सो इट इज फंजाई ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्प्रेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स सो ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा ऑप्शन बी कॉलरा ऑप्शन सी लेप्रोसी एंड ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस Option B, cholera. करेक्ट ऑप्शन बी क्या कॉलरा और कॉलरा कौन सा डिसीज है बैक्टीरियल वायरल या फंगल कौन सा है Bacterial. Yes, Bacterial. it is बैक्टीरियल कौन से बैक्टीरिया की वजह से नेम ऑफ द बैक्टीरिया Vibrio cholerae. Cholerae. यस विब्रियो कॉलरी करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 according to universal immunization program DPT one booster first booster vaccine is to be given to the children of the age so option A 6 to 9 months option B 9 to 12 months option C 12 to 16 months and option D 16 to 24 months so first booster dose DPT का कब दिया जाता है Option B. B ने बूस्टर डोज है बूस्टर ठीक है सो बूस्टर डोज जो होता है डीपीटी का दैट इज गिवन एट 16 टू 24 मंथ्स ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओनली इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट पोलियो इज ऑप्शन ए कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट ऑप्शन बी वैक्सीनेशन ऑप्शन सी एंटीवायरल ड्रग्स ऑप्शन डी योगा एंड मेडिटेशन Option B, vaccination. correct polio vaccination then next question all of the following statements related to functions of food are correct except option A food provides energy for day to day activities option B food builds new cells and tissues for growth option C food prevents and fights infections and option D food is an optional need for living things Food is an optional need D. for living things. करेक्ट इट इज डी ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट है ठीक है ओके देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 36 द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ इज ऑप्शन ए मेडिसिनल साइंस ऑप्शन बी न्यूट्रिशन ऑप्शन सी सोशल साइंस एंड ऑप्शन डी स्पिरिचुअलिटी Option B, nutrition. करेक्ट इट इज न्यूट्रिशन ओके क्वेश्चन नंबर Question number 37. Wilson's disease is a condition of toxicosis of option A iron, option B copper, option C chromium, option D molybdenum. कॉपर की टॉक्सिटी इज विल्सन्स डिसीज ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 38 coitus interruptus is a dash method of family planning option A physical method option B chemical method option C hormonal method and option D behavioral method so coitus interruptus कौन सी मेथड है it is behavioral method not physical ठीक है behavioral so coitus interruptus is a behavioral method option D next question 39 select the correct option family planning is the way option A to decide the age of boys and girls for marriage option B to decide the number and timings of children in the family option C to decide the monthly budget of the family and option D to decide career of children in family Option B, to decide the number and timings of children in the family. correct it is option B okay
ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. Select the correct option. Demography is the option A, scientific study of human population. Option B, scientific study of diseases in human population. Option C, study of healthy habits in human. And option D, study of religiousness in human population. Option A. Yes, it is option A, scientific study of human population. Okay. Then question number 41. Prevention of pregnancy is option A, anti-fertility. Option B, contraception. Option C, conception. And option D, sex education. Contraception. Correct, it is contraception. Then question number 42. Select the correct option. Option A, India has only 2.4% of total land area of the world and possesses more than 16% of total world population. Option B, India has only 16% of total land and फिर से रीड करता हूं. Option B, India has only 16% of total land area of the world and possesses more than 2.4% of total world population. Option C, India has only 1.4% of total land area of the world and possesses more than 24% of total world population. And option D, India has only 24% of total land area of the world and possesses more than 1.4% of total world population. क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए. करेक्ट, इट इज ऑप्शन ए. इंडिया के पास में टोटल लैंड एरिया का 2.4% है एंड जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की 16% है. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन. द फार्मासिस्ट कैन प्ले रोल इन promoting health by following ways. Option A, guide the community about proper use of antibiotics. Option B, guide people about communicable and non-communicable diseases. Option C, can advise community about preventive measures of some common diseases. And option D, can prescribe medicines whenever needed. Option D. Yes, correct. So option D. So pharmacist cannot prescribe medicines. ठीक है, फार्मासिस्ट कोई अथॉरिटी नहीं है. फार्मासिस्ट डू नॉट हैव अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 44. वैसेक्टोमी इज ऑप्शन ए, रिवर्सिबल फीमेल स्टरलाइजेशन मेथड. ऑप्शन बी, इरिवर्सिबल फीमेल स्टरलाइजेशन मेथड. ऑप्शन सी, रिवर्सिबल मेल स्टरलाइजेशन मेथड. एंड ऑप्शन डी, इरिवर्सिबल मेल स्टरलाइजेशन मेथड. So vasectomy, what is Option it? C. Option C. ऑप्शन डी. Option D, it is irreversible. Irreversible male sterilization method. Okay, it is irreversible male sterilization method. Question 45. Which one of the following contraceptive methods is effective against STD? So option A, copper T. Option B, hormonal pills. Option C, condoms. Option D, coitus interruptus. Condoms. Correct. Option C is correct. Then, terminal method of family planning is option A, oral pills. Option B, IUDs, that is intrauterine devices. Option C is symptothermal method. And option D is tubectomy. So, what do you think? Tubectomy. Correct. Tubectomy is the terminal method of family planning. Question number 47. Select the wrong option. Option A, literacy helps to increase the fertility rate. Option B, there is inverse relationship between economic status and fertility rate. Option C, Muslims have higher fertility rate than Hindus. And option D, lesser the age of marriage, higher the fertility. So, what is the wrong? ऑप्शन ए. करेक्ट, ऑप्शन ए इज रॉन्ग. लिटरेसी हेल्प्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट, ये गलत है. लिटरेसी बढ़ती है तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 48.
zoonotic diseases are option A, basically animal diseases accidentally transmitted to human. Then option B, diseases transmitted by arthropods. Then option C, diseases transmitted by rodents. And option D, diseases of men transmitted to animals. So what do you think? Option A. Option A correct. Basically animal diseases accidentally transmitted to man. Okay. Then question number 49. BCG vaccine is option A, Bacillus calus guerin. Option B, Bacillus comet guerin. Option C, Bacillus cholerae guerin. And option D, bacterial cholera guerin. So Option B, Bacillus guerin. Guerin. Correct. Option B is correct. Then question 50. The causative agent for filariasis is, so option A, Wuchereria bancrofti. Option B, Plasmodium falciparum. Option C, Salmonella typhi. And option D, Pseudomonas aeruginosa. Option A, Wuchereria bancrofti. Correct. Option A, Wuchereria bancrofti is the causative agent for filariasis.